यूक्रेन उपरे रूस आक्रमण घटना अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन कहले रूस को परिणाम भोगिबाको हेबो एथिपाई G7 देश एकाठी होइचंती रूस समस्त दाबी को खंडन करिसंते बाइडेन एथिसह रूस चारिटी बड़ बैंक उपरे कटकणा लगाइछंते एथिसह अन्यान्य कटकणा लगाई रूस व्यवसाय यूरो एवं डॉलर रे सीमित रखिछंते तेरे पुटिन का सह तांकर कथा हेबार कोनोसी योजना नाही पुटिन पूर्व सोवियत संघ को पुनर्बार प्रतिष्ठा करने को चाहते किंतु पुटिन यही आशा पूरण हेबनी रूस विरोध में नाटो मजबूत हेबो एथिपाई जर्मनी को अमेरिका अतिरिक्त फोर्स पठाइबो बोली बाइडेन कहते किंतु गुरुत्वपूर्ण कथा है अमेरिका यूक्रेन को सेना पठाइबो नाही एहार अर्थ यूक्रेन सेना को रूस विरोध में लड़िबाको हेबो नाटो देशर समर्थन यूक्रेन सहित रही एही समय आम पई घड़ीसंधि मुहूर्त बोली बाइडेन कहते सेहीपरि रूस यूक्रेन उपरे साइबर अटैक करुछि एहाकु कड़ा जवाब देवाकु अमेरिका मध्य प्रस्तुति करिछि बोली से कहिसंते सेहीपरि रूस प्रसंग रे भारत सहित अमेरिका कथा होइछि कि एही प्रश्न रे बाइडेन कहिसंती आमे भारत सहित ए प्रसंग रे कथा हेइछो हेले कोनोसी निष्कर्ष बाहरी नै तबे जो प्रकार सूचना सामना को आसीछि जे बाइडेन एहाकु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करथिले एवं बाइडेन गोटे कथा कहिथिले जे आमे सेना पठाइबो नाही किंतु ए उपरे पूर्ण भाव में नजर रही प्रकार कथा मध्य बाइडेन कहिथिले रूस परिणाम भोगिबो ए प्रकार कथा मध्य बाइडेन सीधासलख भाव में कहिथिले पूर्व भली सोवियत रूस गठन करबा को चाहुची रूस किंतु ए प्रकार घटना अमेरिका घटाइबा पई देबो नाही ए प्रकार कथा मध्य जो बाइडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कहिसंते पुटिन आक्रमणकारी एवं युद्ध बाछिसंते चारिटी बड़ बैंक उपरे कटकणा लगाइछंती बाइडेन अर्थनैतिक स्तर में दुर्बल करबा पई मध्य चेष्टा करा जाइछि अमेरिका तरफ पूर्व भली सोवियत यूनियन करबा पई चेष्टा करुछि रूस बोली बाइडेन कहिसंते एवं सबथारु बड़ कथा हेउछि जे अमेरिकार राष्ट्रपति जो बाइडेन कथा उपरे सारा विश्वर नजर रही जे जो बाइडेन को प्रकार निष्कर्ष रे पहुंचुछंती एवं कोन कहउछंती तबे जो बाइडेन जो प्रकार मतामत दैछंती जे रूस को ए युद्धर परिणाम भोगिबा पई पड़िबो जर्मनी को अमेरिका अस्त्र शस्त्र नियोजित करैबो बा पठैबो बोली मध्य जो बाइडेन कहिछंती किंतु सीधासलख अमेरिकार सैन्य यूक्रेन पाखकू जिबे नाही यार सीधासलख अर्थ हेउछि जे यूक्रेन को ही लड़िबा पई पड़िबो रूस विरुद्ध रे किंतु नाटो एवं अमेरिका यूक्रेन सहित अच्छी ए प्रकार कथा मध्य कहा जाइछि बाइडेन को द्वारा किंतु अर्थनैतिक स्तर में दुर्बल करबा पई बाइडेन विभिन्न प्रकार कथा कहितबा बेले पांचटी बैंक को मध्य बैन करा जाइछि प्रतिबंधक लगा जाइछि अंतर्जातीय स्तर में रूस को एकचाटिया करबा पई मध्य गोटे प्रकार प्रयास करा जाइछि जो बाइडेन को द्वारा एहारी मध्यरे जेतेबेले सांबादिक पचारि थिले जे भारत सहित ए विषय में आपण कोनोसी प्रकार कथा होइछन्ते कि यार उत्तर रे बाइडेन कहिथिले जे आमे कथा हिचु किंतु यार कोनोसी प्रकार निष्कर्ष बाहरी नाही गतकाल जो दृश्य सामना को आसीथिला हठात टीवी चैनल रे पुटिन आसी कहिथिले जे आमे यूक्रेन उपरे आक्रमण करूछु एवं यूक्रेन रो 13टी शहर उपरे प्रमुख शहर उपरे आक्रमण होइतिला विभिन्न प्रकार दाबी करा जायतिला किंतु यही समय रे बाइडेन को मतामत अमेरिका तरफ कौन मतामत आसिबो ता उपरे समस्तक नजर रहिथिला तबे बाइडेन कहिथिले जे रूस पई एहा एक बड़ झटका हुई पारे रूस को यार जवाब मिलिबो बोली कहिसंती बाइडेन तबे We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds, and yen to be part of the global economy. We'll limit their ability to do that. We're going to stunt the ability to finance and grow the Russian military. We're going to impose major, and we're going to impair their ability to compete in high-tech 21st century economy. We've already seen the impact of our actions on Russia's currency and the ruble, which early today hit its weakest level ever in history. The Russia stock market plunged today. The Russian government's borrowing rate spiked by over 15%. In today's actions, we've now sanctioned Russian banks that together hold around $1 trillion in assets. We've cut off Russia's largest bank, a bank that holds more than 1/3 of Russia's banking assets by itself, cut it off from the U.S. financial system. And today,
we're also blocking 4 more major banks. That means every asset they have in America will be frozen. This includes VTB, the second largest bank in Russia, which has $250 billion in assets. As promised, we're also adding the names to the list of Russian elites and their family members that were sanctioned as well. As I said on Tuesday, these are people who personally gain from the Kremlin's policies, and they should share in the pain. We will keep up this drumbeat of those designations against corrupt billionaires in the days ahead, particularly in the East. NATO will convene a summit. We'll be there to bring together the leaders of 30 allied nations and close partners to affirm our solidarity and to map out the next steps we will take to further strengthen all aspects of our NATO alliance. Although we provided over $650 million in defensive assistance to Ukraine just this last year, let me say it again. Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. If it did, the consequences for America would be much worse. America stands up to bullies. We stand up for freedom. This is who we are. Let me also repeat the warning I made last week. If Russia pursues cyber attacks against our companies, our critical infrastructure, we are prepared to respond. For months, we've been working closely with the private sector to harden their cyber defenses, sharpen our ability to respond to Russian cyber attacks as well. Is India fully in sync with the United States on Russia? We're in consultation with India today. We haven't resolved that completely.